Hi, today is 15th March and Modi ji is coming to Pathanamthitta. So I am going to the stadium. Hope I might meet him. Hope I will get some seat to sit. Let's see. Reached Pathanamthitta main town. Road is blocked. There's full security. Slowly it seems to be getting crowded. While trying to find some seat in this crowd, I found someone. That's Shivu's Malayalam teacher, Maniamma teacher. Finally, Papa and Suresh uncle came to the rescue. They finally arranged for me a VIP pass. At last, I got a seat almost in the front. വേണം കൊടും വെയിലിനെ പോലും തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചു പോകാൻ. അതിനുവേണ്ടി ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ശക്തമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങുക എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ നമുക്കേവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പിതാവിൻ്റെ മകളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നത് ആരാണെങ്കിലും അതിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് BJP? ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഉത്തരവാണ്. കാരണം ഞാൻ BJP എന്ന പാർട്ടിയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മോദിജിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു നായകൻ വേണം. അത് ഏത് പാർട്ടിക്കായാലും വേണം. ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കാരണം അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടി എന്നെ കൂടെ നിന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കൊണ്ട് നടക്കാറ്. ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പാർട്ടിയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഈ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. സ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, सारे लोगों को अस्पताल में फ्री रेशन मिले, अस्पताल में फ्री मेडिसिन मिलेगा. എല്ലാ പാവങ്ങൾക്കും സൂര്യോദയം, അരുണ സൂര്യോദയം വരികയാണ്. ആ അരുണ സൂര്യോദയം ആരാധനായ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇനി കേരളത്തിലെ അതിരുകൾക്കകത്ത് തളച്ചിടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തകന്മാർ ആരാധനായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദിജിയെ ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗവും മുൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ശക്തനായിട്ടുള്ള സമര പോരാളിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കുമ്മനം രാജേട്ടൻ. വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ 5ാമത്തെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തനായ പ്രധാനമന്ത്രി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാം.
Article candidate Sri V. Muralidharan ji presenting the traditional Onam bill, which is on offering to Lord Sri Padmanabha Swami on auspicious occasion of Tiruvonam. കണ്ണാടിയാണ് നൽകിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കല്ലിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള ആറന്മുള കണ്ണാടി ശ്രീ വിഷ്ണു മുരുകൻ എന്ന ആറന്മുളയിലെ പ്രവർത്തകൻ നൽകിയ ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ്. ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. അടുത്തതായിട്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ഇന്ത്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അവർ. മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ബൈജു കലാശാല. അതേപോലെ ഇവിടെ സന്നിധരായ അക്കാമാചരിയാന്ത ജാൻസി റാണി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, a freedom fighter from Kerala. He is best known from the Vajavar he displayed during a mass protest rally led in 1938. He is among many unsung heroes of India's freedom struggle. മാസത്തിനിടയിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മാവേലിക്കരയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബൈജു കലാശാല ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ भारत माता की, भारत माता की. स्वामी शरणम अय्यप्पा. पठनम दिट्टाइले एले सहोदरी सहोदरमारे എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. आज पतनम थिट्टा का ये माहौल बता रहा है इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है. केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है. अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है. बीजेपी यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है. यहां बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं. ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की प्रदेश को जरूरत है. इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार 400 पार. अब की बार इतना नानोरिल अधिगम इतना बड़ा और नाकाबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है. हम जानते हैं यहां रबर के किसान हैं. कितनी मुसीबतों से रबर का किसान गुजारा कर रहा है. लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ ने
अपनी आंखें बंद कर रखी है। केरला में कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है। यहां तक कि चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन गए। महिलाएं, युवा और हर वर्ग डर में जी रहा। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। केरला को इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। यहां एलडीएफ, यूडीएफ दोनों लड़ने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं। और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए। खास करके मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान उनके इस खेल को बराबर समझ गए हैं। इन दलों ने सत्ता के लालच में जिस तरह के खेल खेले, जिस तरह राज्यों को बर्बाद किया, वो भी अब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जिस राज्य से एक बार ये दल पराजित हो जाते हैं, ये दल निकल जाते हैं, वहां के लोग इन्हें वापस लौटने ही नहीं देते। अब देखिए पड़ोस में तमिलनाडु में कांग्रेस ने 1962 में आखिरी चुनाव जीता था। यूपी, गुजरात, बिहार में भी कांग्रेस ने 4 दशक पहले, 4 डेकेड पहले आखिरी चुनाव जीता था। ओडिशा में भी कांग्रेस 3 दशक से सरकार से बाहर ही है। देश के कितने ही राज्यों में आज कांग्रेस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। महान परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, और केरला के लोग, यहां के नागरिक प्रोग्रेसिव लोग हैं, अच्छा सोचने वाले लोग हैं, दूर का सोचने वाले लोग हैं। जबकि कांग्रेस और एनडीए ये पिछली शताब्दी की पुरानी सोच से भी ज्यादा और पुरानी सोच रखने वाली पार्टियां हैं। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं
और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। जुड़ी हुई है। लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ के लोग आस्था को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। यूडीएफ एलडीएफ वोट बैंक की राजनीति और समाज में खाई पैदा करने में लगे रहते हैं। केरला का कल्चर शांति को बढ़ावा देने वाला कल्चर, लेकिन यूडीएफ एलडीएफ के लोग दिन रात राजनीतिक हिंसा में विश्वास करते हैं। मुझे केरल का आशीर्वाद चाहिए, मुझे केरल के लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। सरकार के विकास कार्य बताऊंगा तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हम केरल के लोगों के कल्याण के लिए कितना काम कर रहे हैं। मैं एक जिले का बताता हूं। पथनमथिट्टा में अराउंड 3,50,000 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। पथनमथिट्टा में लगभग 5 लाख लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। पथनमथिट्टा में 1,50,000 से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 380 करोड़ रुपए दिए गए। पथनमथिट्टा में 1,50,000 से ज्यादा पशुओं का वैक्सीनेशन हुआ है। जहां करीब 12,000 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। केरला के विकास के लिए बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच ये भी जरूरी है कि केरला के लोगों की सही भावनाएं केंद्र सरकार तक पहुंचे। अगर यहां बीजेपी के सांसद होंगे तो केरला की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने में और केंद्र सरकार की योजनाओं को यहां लागू करने में भी और आसानी होगी। केरला के लोगों को विकास की जिन योजनाओं परियोजनाओं की जरूरत है वो अपनी बात बीजेपी सांसदों से और बेहतर तरीके से लोग अपनी बात पहुंचा पाएंगे। मैं जब भी विदेश जाता हूं, वैश्विक नेताओं से मिलता हूं, तो वो सभी और खासकर गल्फ देशों के नेता, प्रवासी भारतीय और विशेष करके केरला के लोगों के बारे में बहुत बातें करते हैं। मैं भी केरला के परिश्रमी लोगों की खूब तारीफ करता हूं। केरला की ब्रांडिंग जहां जाता हूं वहां करता हूं। मैं विदेशों में लोगों को बताता हूं कि क्यों हमारा केरला इतना खास है। 10 वर्षों में हमने देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए जितना ज्यादा काम कर सकते हैं करने का प्रयास। आप जानते हैं हम युद्ध के बीच फंसी हमारी नर्स बहनों को भारत वापस लेकर आए थे इराक से। मोदी जुड़े गारंटी। ईस्टर भी आने वाला है। ये दिन हमें
जीसस क्राइस्ट के आदर्शों की याद दिलाता हूं। मैं आप सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे पारसी भाइयों का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार नवरोज का त्योहार भी आने वाला है। रामनवमी और होली भी बिल्कुल पास में है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है केरला का बीजेपी के लिए जो स्नेह है इस बार विशाल जन समर्थन में बदलेगा और इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। एलडीएफ यूडीएफ के विष चक्र से हमारा केरला बाहर निकालेगा और मोदी को केरला की सबसे ज्यादा सेवा करने का मौका देगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मोदी केरला के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। രേഖപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കരമന ജയന്തിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നമുക്ക് ആവേശമായി വന്ന നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാന ടാറ്റ പറയുന്നത് സാധാ